देखिए, जब मेरे फादर बॉम्बे में नहीं रहते थे, 20 दिन रहते थे मद्रास में, क्योंकि एक दौर आया था मद्रास फिल्मों का. मद्रासी फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स who were based in Madras and Chennai, they used to make Hindi films and they used to shoot them in Chennai. यहाँ से पूरा कंटिंजेंट जाता था एक्टर्स का, डायरेक्टर वहीं का होता था, लेकिन एक्टर्स वैक्टर्स सब बॉम्बे से होते थे, राइटर्स बॉम्बे के होते थे, बिकॉज दे हैड टू राइट द उर्दू डायलॉग्स और हिंदी डायलॉग्स. My father stayed 20 days in a month in Madras. He was a very popular writer. He worked with everybody. L.V. Prasad के 5 super duper गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हिट्स उन्होंने लिखे हैं. नागी रेड्डी की प्रेम नगर लिखी, वीनस कृष्णमूर्ति की कई फिल्में लिखी. तो ये मद्रास का एक दौर था जो अब वापस आ गया है. ये जो 100 डांसर्स आप देखते हैं, कहाँ से आया है? हॉलीवुड से. हम सोचते हैं कि हॉलीवुड में ये जो वीडियोस बनते हैं, डांसिंग वीडियोस या सॉन्ग वीडियोस, ये एक्चुअली मद्रास की अर्लियर फिल्म्स देखेंगे आप, प्रभुदेवा, कि वहीं से आया हमारे बॉम्बे फिल्मों में. तो हम बहुत जल्दी कॉपी भी करते हैं. हम ये हमने पिकअप किया हुआ तमिल सिनेमा से, साउथ इंडियन सिनेमा से पिकअप किया हुआ. सो वी पिकअप अ लॉट ऑफ थिंग्स. अब वो दौर आ गया फिर से, सिंगम ये वो और गजनी, दीज आर ऑल तमिल फिल्म्स. सो इट्स नॉट अ न्यू फेज. दिस फेज कम्स एंड इट गोज. सो दैट फेज हैज रिटर्न्ड व्हेन South Indian films overpowered Hindi films. So there were Hindi directors Hindi film producers who are now buying the rights of Tamil films, successful films, and making them into Hindi. The heroine of Saath Hindustani was again a friend of mine, the original heroine. Her name was Neena Singh. And Neena Singh is the person who actually brought in Amitabh Bachchan into films. It's not me. I was just an कैटलिस्ट बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, जो नीना सिंह के पास एक फोटोग्राफ थी. एंड नीना सिंह ने देखा था अब्बास साहब इज वेरी क्लोज टू टीनू. टीनू इज वेरी क्लोज टू अब्बास साहब. अब्बास साहब वाज अ वेरी वाइल्ड टेम्पर्ड मैन, गॉट एंग्री वेरी सून, एंड वो फ्यूज उड़ जाता था उनका. तो लोग घबराते थे उनसे. मैं नहीं घबराता था, वो हमारे फैमिली के दोस्त थे, रोज मुलाकात होती थी. तो नीना सिंह ने कहा, एक लड़का है कलकत्ते में, बर्ड एंड कंपनी में काम करता है, वो एक्टर बनना चाहता है, अगर आप कैसे न कैसे ये तस्वीर उनको दे दें और कह दें कि भैया इसका एक वो ले लें ऑडिशन. तो मैंने, आई वाज जस्ट अ पर्सन हु हैंडेड ओवर दैट फोटोग्राफ टू मिस्टर अब्बास एंड सेड हिज नेम इज अमिताभ, ही इज वर्किंग इन कैलकाटा एंड ही वांट्स टू कम एंड गिव एन ऑडिशन. तो वहां से ये, अब क्योंकि नीना सिंह used to be seen in my house. She was a friend of mine who was a model from Delhi who had come to make a name in Bombay modeling world. He was friendly with me. Abbas Saab saw her in my house and said, will she act? So she became an actor. She was the heroine of South Hindustani. जिसके लिए मुझे बाद में बहुत गालियां मिली, बिकॉज पहला शेड्यूल खत्म हो गया और वो चली गई दिल्ली. सेकंड शेड्यूल जो गोवा में होने वाला था वो वापस आई नहीं. तो अब्बास साहब उस दिन, नेक्स्ट डे द एंटायर यूनिट वाज लीविंग फॉर गोवा. ऑल दीज एक्टर्स, उत्पल दत्त एंड मधु एंड अमिताभ बच्चन एंड जलाल आगा एंड अनवर अली, नेक्स्ट डे जा रहे हैं. अभी तक नीना सिंह का कुछ पता नहीं था. एंड अब्बास साहब उस दिन रात को तू मैं मुझे गालियां कि तुम्हारी दोस्त नहीं आई है दिल्ली से, मेरी पिक्चर को बर्बाद कर दिया फलाना. एंड यू नो, यूज्ड टू शाउट एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. उस दिन इंसिडेंटली आई हैड हर विद मी एज माय कंपनी, विद मी शहनाज. तो ही सडनली सॉ हर, ये काम करेगी? तो मेरे ख्याल सर वो अभी तो नीना सिंह दिल्ली में, आप बोल रहे ये काम करेगी, कल जाना है. तो आई आस्क्ड हर, पुशी, सर ब्रदर जलाल. तो आई डोंट नो, माय फादर विल नेवर अलाउ मी. तो आई आस्क्ड जलाल के, जलाल को फोन किया कि भाई यहाँ आओ, यहाँ पे तो क्राइसिस हो गया. जलाल आया. जलाल को कहा, यार ऐसे ऐसे अब्बास साहब कह रहे हैं कि शहनाज को, पुशी को हीरोइन बना दें. तो डैड मानेंगे नहीं, लेकिन देखते हैं, लेट मी गो होम. तो घर जाके 3 बजे आगा साहब मंजूर हुए. उन्होंने हाँ किया और सुबह 7:30 बजे की ट्रेन पकड़ी इन लोगों ने गोवा जाने के लिए, विद हर एज द हीरोइन. तो शी लास्टेड एज द हीरोइन. It's great stories, little snippets, how you get. And I think
Her entire family was against having a Hindu-Muslim marriage, but it was the brother who was my friend who said कि कुछ भी हो जाए तुम लोग जाओ शादी करो मैं हूँ तुम्हारे साथ में. तो जब जब बेटे का स्टैंड देख लिया ऐसा फादर ने, अब आगा साहब ने, तो इसे रोके ठीक है शादी करे, करना चाहते हैं कर लें. तो वी जस्ट साइन द रजिस्टर, वी गॉट मैरिड, रजिस्टर्ड मैरिज हुई हमारी. एंड लेटर ऑन आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई बिकेम, इनकी दो और बहनें हैं, आई बिकेम द फेवरेट सन इन लॉ ऑफ आगा साहब, द मैन हु फॉट अगेंस्ट मी गेटिंग मैरिड. Then we became very, and I directed him in two films. I had the good fortune of directing him. So we became best of friends. We became, फिर वो son-in-law का relationship नहीं रहा, दोस्तों का relationship हो गया था. It was nice. It's been a great journey. I very strongly feel, and I stand by my words, that we have no writers. बहुत कम writers हैं, गिनती की. पहले हर आदमी writer था, and of great repute. आप डायलॉग राइटर्स देख लीजिए, स्टोरी राइटर्स देख लीजिए. दे हैड अ ग्रेट बैकग्राउंड ऑफ लिटरेचर बिहाइंड देम. दे हैड रेड अ लॉट, they were exposed to a lot of literature. Today I don't think we are exposed only to foreign films, that's all. It's very unfortunate. Very few writers I can mention जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं. And they are the greatest backbone. I mean, good writers who have a great literature background are great. Your backbone is based on that. Your foundation is based on good writing. And unfortunately, we don't have any. अब वो कब वो generation change होगी? देखिए speed, I mean everything changes. Speed of film has changed. Technology has changed. जैसे आपने कहा writers missing है, directors missing है. Directors, I think technology has made whatever they have sort of invented. They have made people who don't have any idea of direction into directors. So technology helps you in that way. It creates, it fills up that vacuum. जो आपको एक background होना चाहिए about filmmaking. I don't fight against that because there are people who have directed their first films without being assistants, and they have made a name for themselves. लेकिन technology of course is a great help factor. जो पहले नहीं था. पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता था, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता था. It's a tough life. It's a very tough life. People only see the glamorous part of a 3-hour film, and they read a lot about the prosperity behind an actor's. I mean, you become successful, so you become prosperous, you become wealthy, but behind that there's a lot of heartbreaks, there's a lot of hard work, there's a lot of frustration. Of standing outside producers' doors. Even Amitabh Bachchan has had to do that. Amitabh Bachchan was told very rude things in his life. So even he has had to struggle. But then you have to be like Amitabh Bachchan again, who didn't give up, who was faced with the biggest failures of his life in films. He had a string of 10 failures. And people used to say, go back. On the road they used to scream at him, go back home. What are you doing in the films? He was a big disappointment in their eyes. But that man never gave up. He became that person who said the film industry will not exist without you. So you must have that will. You must have that courage. You must have immense willpower to face any kind of... आपको बिल्कुल, I mean, people will treat you like dirt. You might not be able to enter an office. But the idea is don't give up. It's a hard struggle. It's a very hard struggle. There's a lot of tears, but along with those tears comes a lot of laughter also later. But then you have to travel that road. To attain that laughter, you have to shed a lot of tears. A lot of tears. If you're prepared to do that, and with a little bit of luck. You need a little bit of luck. Once you have that, sky is your limit, I think. For newcomers, this message is for newcomers. मुझे क्या लगता है कि I don't think I can be that honest to tell you as to what made me give up direction, but I can in a very offhanded manner say that I was lucky to become an actor. I am lazy. I gave up direction because I thought it was a lot of hard work, a lot of tears, a lot of tension, a lot of stress, and I had
a job as an actor which is a very comfortable way of working. Actors hate me because I say it's the easiest job in the world. But I believe in that. It's the easiest job in the world. Do it well, enjoy it, and there's nothing like acting in the world. There's nothing, because everyone is a born actor. I don't like you, but if I'm sitting in front of you, I'm showing that I'm liking you very much. That is acting. And it's happening every minute of our lives, every second of our lives. So everyone is an actor. The only thing is you have to be comfortable in front of the camera. People, a lot of actors have come and asked me कि भाई क्या acting के लिए क्या हो? मैंने कहा आप actor तो हैं ही. उसमें सिर्फ ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए. कैमरा के सामने आप नर्वस ना हो जाएं. डायलॉग कैसे डिलीवर करनी है उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है. हर आदमी एक्टर होता है. देखिए टाइम बदलता है, टाइम बदल जाता है. आपका एक्सपोजर सिर्फ सिनेमा नहीं रहता है. आपका एक्सपोजर टेलीविजन हो गया है, इंटरनेट हो गया है, मोबाइल फोन हो गया है. So times have changed, and you're exposed to a lot of things immediately. जो पहले नहीं होता था, बहुत टाइम लगता था. पहले एक ही चैनल होता था जो आप दूरदर्शन का टी टू 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 सुनते थे. एग्रीकल्चर ज्यादा देखते थे rather than फिल्म. सिर्फ एक प्रोग्राम आता था गाने जिसमें गाने और पूरी फैमिली बैठ जाती थी गाने देखने के लिए. Because that's a new thing for radio, because there's only one channel. Today you have hundreds of channels, and at the press of a button you can go anywhere in the world. Same thing with the internet. So things have changed, ideas have changed, values have changed, and you get the kind of films that you really want. Of course there will be parallel cinema, of course there will be good cinema. Today everyone is talking about a film called Piku. And Piku में मुझे strange चीज क्या लगी है, लोग जो मुझे कह रहे हैं उसमें writing बहुत अच्छी है. I haven't seen the film, but I want to see the film because for the first time, a lot of people have told me about the writing. Just go and hear the dialogues. So that means there is an era coming back, there is a conscious effort of wanting good writing. Where it will come from, which writer will give you good writing? Of course there are a few writers. लेकिन उनके घर के बाहर में भीड़ लग जाएगी because I mean, you'll see the difference between a bad writer and a good writer. So everyone wants a good writer. पहले ये जमाना था कि you had good writers all around you. आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे शायर साहब खड़े हैं, वहाँ देखा तो मजरू साहब खड़े हुए हैं, राजेंद्र कृष्ण खड़े होंगे, इंदिरा आनंद साहब खड़े हुए हैं. So many writers. I mean, एक राइटर ले लीजिए मुगल आजम का. आज तक लोग पिक्चर देखते हैं. मुगल आजम मैंने कुछ सैकड़ों बार देखी है, लेकिन I just watch it again with the same interest as if I'm seeing it for the first time. That's because of the writing. And writing sort of is your main backbone of your film. It's your foundation. आएगा ज़माना आएगा, I'm sure. Better writers will come up. Hopefully in my lifetime they'll come up. And somebody like my father who stood behind me, there'll be writers like that standing behind good directors. Let's hope so. Well, the easiest thing is to keep a pet. Because you want company, you need someone to talk to. But it's the most heartbreaking thing. Every time my dog passes away, I swear I'll never get another dog. But I get another one. Because the attachment is such, I mean, he's more than a human being with you. I don't know why people call them pets, because I call them friends. And that's why my dog's name is Buddy. He's like Buddy, but I feel very sorry for him now, because he can't see, he can't hear, and ठोकर खाता रहता है, उठने में दर्द होता है. So it's old age. So I see myself also becoming like him one day. When I will become blind and my limbs will not hold me. But I've sworn now, at least, and reaching at the age that I have, I'll never keep a pet again. I'll never keep a friend again. Chili.